Good evening. Today is 1st January 2016-17. So we discuss governance of India. Okay. So it's read by me. My name is Suryakumar Dakwa. So हमने पूरी पूरी जो बुक है गवर्नेंस ऑफ इंडिया का एक बुक है. ओके. लक्ष्मीकांत जी का. ओके. तो इस बुक को हम कवर करेंगे. पूरी की पूरी हम रीडिंग पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके. तो ये मेंस के लिए एंड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके. तो हम स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके. ठीक है. सिलेबस देखिए. पहले तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. एक वीडियो में सिलेबस डिस्कस करने के लिए. तो देखिए राइट इशू ह्यूमन राइट्स. ओके. सो हमें राइट इशू के बारे में क्या क्या है हमें समझना चाहिए. ह्यूमन राइट्स जो है, देखिए ह्यूमन राइट्स है राइट्स ऑफ वुमेन का, जो वुमेन है उसका वुमेन राइट्स क्या है. राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, राइट्स ऑफ SC ST. ओके. राइट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास का, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स का राइट क्या है. ओके. राइट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ ड्रग एब्यूज. ओके. राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट्स ऑफ एजुकेशन. पब्लिक पॉलिसी के बारे में हमें देखना चाहिए क्या क्या. देखिए ये तो हम कवर करेंगे. ओके. राइट्स जो राइट है, जितना राइट है, राइट ऑफ एजुकेशन. ओके. ये सब हम पूरी की पूरी कवर करेंगे. इस बुक से हम पढ़ेंगे. ओके. तो उसके बाद देखिए पब्लिक पॉलिसी क्या है. नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक पॉलिसी देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेशनल जो पॉलिसी है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये पब्लिक पॉलिसी. नेशनल पॉलिसी ऑन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में हमें जानना चाहिए. ओके. उसके बाद देखिए उसके साथ साथ देखिए जो नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. ओके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वुमेन के बारे में हम कैसे हम वुमेन को एम्पावर कर सके, एम्पावरमेंट दे सके, तो इसके बारे में. नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो पर्सन है. ओके. नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन के लिए, नेशनल यूथ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर. ओके. ओके. नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके. ओके. नेशनल पॉलिसी ऑन नेशनल ट्राइबल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर ई गवर्नेंस. ओके. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में हमें जानना चाहिए. नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल अर्बन हाउसिंग पॉलिसी एंड हैबिटेट पॉलिसी. ओके. इसके साथ साथ देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स. ओके. नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी. ओके. नेशनल मिनरल पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, नेशनल देखिए लिटिगेशन पॉलिसी, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. ओके. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, कैबिनेट सेक्रेटरीज. ओके. प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. ओके. देखिए बोर्ड्स एंड कमीशन. ओके. तो बोर्ड्स एंड कमीशन के बारे में हमें जानना चाहिए. पब्लिक एंटरप्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में हमें जानना चाहिए. क्या करना, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टोरेट्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ओके. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर, रीजनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए डिविजनल हो गया. इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ सिविल सर्विस, ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विस. इसके साथ देखिए रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विस,
recruitment higher service, okay, trainings of civil servants, pay and service condition, okay, generalists and specialists in civil service, and minister civil servant relations, role of urban personal life in ministry, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए क्या है ना, बजट कंसेप्ट फॉर्म्स, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट्स, एनाउंसमेंट ऑफ बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेब्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ अर्बन ह्यूमन होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल पुलिस फोर्स, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, state policy administration, city policy administration, okay, role of home guarantees, guards, civil defense organization, national security council, control over administration, legislative control, executive control, judicial control, citizens control, statutory bodies. देखिए statutory bodies में क्या है, okay, control over administration में देखिए ये चार है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल एंड सिटीजन। देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, स्टैट्यूटरी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, सेंट्रल कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड पर्सन, रेगुलेटरी बोर्ड बॉडीज देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल जो गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ओके, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ओके, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके, वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ओके, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नेशनल रेनफीड एरिया अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, तो पर्सन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ओके, तो फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडीज, नेशनल, ओके, क्वासी जुडिशियल, ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कॉम्पिटिटिव एपीलेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपीलेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, कस्टम्स एक्जीक्यूटिव एक्साइज सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल और इलेक्ट्रिसिटी, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, ओके, तो उसके बाद देखिए तो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल, देखिए एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ऑटोनोमस बॉडीज डेलिमिनेशन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ ऑटोनोमस बॉडी डेलिमिनेशन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, उसके साथ देखिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, सेल्फ स्टाफ सेक्शन कमीशन, एडवाइजरी बॉडीज, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट, ऑफिस ऑफ द चीफ एडवाइजर कॉस्ट,
Office of the Principal Scientific Advisor, executive bodies, Khadi and Village Industries Commission, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Excise and Customs, Custodian Enemy Property for India, Register General and Census Commissioner of India, Government Intervention for Development. The government intervention for डेवलपमेंट के लिए देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, देखिए आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ओके, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरवेज मैनेजमेंट प्रोग्राम, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कीम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, निर्मल भारत अभियान, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया स्कीम, ओके, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, भारत निर्माण प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, राजीव आवास योजना, ओके, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम, राजीव ऋण योजना, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, वेलफेयर स्कीम, वालनरेबल सेक्शन, वुमेन, देखिए वेलफेयर ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन, वेलफेयर ऑफ SC, वेलफेयर ऑफ ST, वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, welfare of disabled person, welfare of older persons, welfare of victims, okay, drug abuse, okay, उसके बाद देखिए लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वालनरेबल स्कीम, क्या क्या प्रोटेक्शन एंड फॉर वालनरेबल सेक्शन के लिए, ओके, चाइल्ड सिविल राइट एक्ट 1955, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 and Domestic Violence Act 2005, Sexual Harassment of Women and Workplace Act 2013 में, Children Sexual Offence Act, okay, जो 2012, Institutions and Bodies for Vulnerable Section, okay, Central Social Welfare Board, इसके बाद देखिए नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट एंड ऑफ वुमेन, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला कोष, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, ओके, बाबू देखिए बाबू जगीभाम राम नेशनल, ओके, नेशनल फंड फाउंडेशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल वाकफ काउंसिल, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सोशल डिफेंस, नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, देखिए गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिटीजन्स सेंटर चार्टर, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का साथ हमें कंपैरिजन करेंगे ब्रिटिश के साथ, फ्रेंच के साथ, जापानीज के साथ, सोवियत के साथ एंड रशियन के साथ, ओके। अपेंडिक्स 1 देखिए लिस्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशनर्स, ओके। अपेंडिक्स 2 में देखिए, अपेंडिक्स 1 में हमने क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ कमीशन एंड कमिटीज एंड कमीशंस, अपेंडिक्स 2 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हुआ था एंड कमीशन देखिए मोएली, देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन, रिपोर्ट ऑफ कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। अपेंडिक्स 3 में क्या लिखेंगे, कमिटी ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, छोटा टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी रिकमेंडेशन। अपेंडिक्स 4 में कमिटी ऑफ ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, सरफ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ कमिटी, फीचर ऑफ द मॉडल पुलिस एक्ट। अपेंडिक्स 5 में क्या है, 60 पे कमीशन, ओके, श्री कृष्णा, ओके, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अपेंडिक्स 6 में देखिए सेवेंथ पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड।
अपेंडिक्स 7 में देखिए कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स, ओके, स्ट्रक्चर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ कमिटी ऑफ द कमिटी, फाइंडिंग ऑफ द कमिटी, रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। अपेंडिक्स 8 में देखिए 13th फाइनेंस कमीशन केलकर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अपेंडिक्स 9 में देखिए 14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। उसके बाद देखिए 20th लॉ कमीशन अपेंडिक्स 10 में कॉन्स्टिट्यूटेड, अगेन। उसके बाद अपेंडिक्स 11 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन गवर्नेंस, ओके। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओके। सो उसके बाद देखिए जो नेशनल कमीशन ऑन रिलेटेड ह्यूमन राइट्स यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रायोरिटीज नेशनल यूथ पॉलिसी के लिए। ऑब्जेक्टिव नेशनल कमीशन ऑन रिलेटेड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट्स ऑफ इन स्टेट्स, ड्यूटीज ऑफ गवर्नेंस, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके। गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, गोल क्या है नेशनल पुलिस एंड रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, सिलेक्शन ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सेल्स, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड ऑफ कंपनी जो है, डायरेक्टरेट्स ऑफ and their heads, again district departments and their heads, again names of subdivisions and their heads, names of tehsils and their head, name of the circles and their head, again authorized strength of all India service, okay. Pay commission appointed so far in India, okay. Minister versus civil servant, okay. Okay, strength and expenditure of central police force, organization, setup of state police, with cities and with police commission system, national security advisors appointed so far, census motion versus no confidence motion, delimation commissions constituted so far, free independence law commissions appointed so far, regional and sub-regional offices of the SSC, okay. Hariyali versus integrated watershed management program, okay. Components, allocations of and funding patterns of NRDWP, okay. Targets under Bharat Nirman program, items covered under 20 points program, criteria for release of funds to states and united territories under the SCA to SCPSP, okay. उसके बाद देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड पर्सनस के लिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मेजर टेकन टू इम्प्लीमेंट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ओके। तो 1989 में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स, establishment of special police stations 1989, states and union territories wise measures for implementation and monitoring, okay. Act, okay. States and union territories wise status of implementation of the Forest Right Act 2006, mission mode projects under national e-government plan, okay. Support components under national e-governance plans, Sovo term model assessment criteria, French constitution at a glance, Japanese, okay. Scheme of revised pay brands, share of states and central tax revenue criteria and weights for tax devolution grants and EID to states 2010 to 15, okay. तो इसके बाद देखिए प्रीलिमिनरी जो एग्जाम का जो सिलेबस है पेपर 1 का जनरल स्टडीज़ का, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानना चाहिए एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ओके। तो हम पहले एक एक करके स्टार्ट करेंगे। मेन एग्जामिनेशन में क्या देखिए पेपर 3 में, ओके, जनरल स्टडीज में देखिए गवर्नेंस, पेपर 3 का जो जनरल स्टडीज़ 2 का, ओके। देखिए जो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानना चाहिए, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स एंड अमेंडमेंट्स, significant provisions and basic structure, functions and responsibilities of the union and states, okay.
तो उसके साथ इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, ओके, devolution powers, powers and finance up to local levels and challenges therein, the separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, okay, comparison of the Indian constitutional schemes with that of other countries, parliament and state legislature structure functioning, okay, conduct on business powers and privileges and issues arising one of these, okay, structure, organization and functioning of the executive and judiciary ministries, okay, departments of the government, pressure groups and formal informal associations of their role in the polity, salient features of the representation of People's Act, appointments of various constitutional posts, power, function and responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies, government policies and intervention and for development and various sectors, issuing, arising, their design and implementation, development process and the development industry, role of NGOs, SHG, various groups of association, donors, okay, charities, institutional and other stakeholders, welfare schemes and vulnerable sections popular by the central and state and the performance of the scheme, mechanism, laws, institution and bodies, okay, constituted for the issues for the protection and betterment of these vulnerable sections, issues relating to development and management of social sector and service related to health, education, human resource, issues related to poverty and hunger, okay, so important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, applications, models, okay, success, limitations and potential citizens charter, okay, citizen charters, transparency, accountability and institutional and other measures, okay, role of civil services in a democracy, India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global regrouping and agreements involving India and or other affecting India's interest of politics of development and developing countries on India's interest in Indian diaspora, again, in important international institutions, agencies and fora, the structure mandate. The book focuses exclusively on topics on government governance and does not include those topics already covered in लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक्स. देखिए, दिस इज बुक जो है एक्सक्लूसिवली ऑन टॉपिक्स ऑफ गवर्नेंस एंड डज नॉट, जो इंक्लूड नहीं है ऑलरेडी कवर्ड, डज नॉट इंक्लूड दोज टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड इन, जो कवर्ड लक्ष्मीकांत में है तो वो इसमें नहीं है. सो उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. तो आई थिंक आप समझ गए हो. तो बहुत बड़ी लंबी सिलेबस है. हमें इस तरफ नहीं, हमें इसके तरफ एंड इस तरफ चलना चाहिए, इस सिलेबस की तरफ. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू. ओके, तो पहले हम राइट इशू के बारे में स्टार्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बाद में चलेंगे. ओके, फंक्शन देखिए, उसके साथ पार्लियामेंट, स्टेट, ओके, पीपल्स एक्ट. ओके, इस तरफ जाएंगे स्लोली. सो आई थिंक आप समझ गए हो. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग.